दो। शर्मा के अपना आंचल लहरा दो। हम जुल्फे तो बिखरा दे, दिन में रात न हो जाए। हम आंचल तो लहरा दे, बरसात न हो जाए। होने दो बरसाते, करनी है कुछ बातें। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो। दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो। दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो ना जाए, दूर तुमसे हो ना जाए। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमें से चुरा लो। दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो। Halo semuanya, di sini akan aku ceritakan sebuah kisah cinta di antara insan manusia yang mengejar arti cinta sejati, yang dibintangi oleh Mas Insta, Mas Tele, Roro Selfie, Roro Jaim, dan Roro Anteng. Bagaimanakah kehidupan mereka? Lika-liku cinta yang ada, kerumitan, suka duka. Tapi percayalah, cinta itu selalu tahu siapa pemiliknya. Sejauh apapun ia pergi, bila memang berjodoh, pasti akan kembali. Mari kita saksikan keluarga medsos berikut ini. Pengumuman. Besok lusa akan diadakan pesta pemilihan istri untuk calon kubang desa kita, yakni Mas Insta. So, untuk anda segera mempersiapkan diri. Khusus untuk Dek Roro Anteng, nanti tunggu giliran kita. Oke sudah? Jangan lupa nanti malam pukul 8 malam di rumah Mas Insta. Silakan untuk para Roro bubar, dan untuk Dek Roro Anteng, ayo ikut Mas jalan-jalan.
सूरज हुआ मद्धम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मद्धम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मद्धम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। है खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं। क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। से यूं मैं तो रंगी हूँ सनम, पाके तुझे खुद से ही खो रही हूँ सनम। ओ माहिया वे तेरे इश्क में, हाँ डूब के पार में हो रही हूँ सनम। सागर हुआ प्यासा, रात जगने लगी, शोलों के दिल में भी आग जलने लगी। मैं ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है
सजना। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? सूरज हुआ मद्धम, चांद चलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा? Mas Insta mau cari istri. Aku harus cepet-cepet cari baju yang bagus, yang mahal, biar nanti kalau ketemu aku, Mas Insta langsung jatuh hati, kelepak-kelepak, langsung minta foto, terus di-upload di Facebook, dan aku pamerin ke semua orang biar pada iri, menangis. Walah Yuyu, kamu tuh sudah tua loh. Nanti jangan berharap-harap yang tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh baru tahu rasa. Biarin mau jatuh, asal jatuh ke pelukannya Mas Insta. Heleh, banyak berharap. Kalau nanti nggak kesampean, gimana tuh? Terserah aku. Nanti kalau aku terpilih, aku ajak kamu selfie deh. Aku kan artis, ya enggak? Artis? Artis disolokan itu yang benar. Mulut Mbak Yu itu manis semanis suapan para pejabat yang suka nyuap rakyat. Heh, jangan ngadi-ngadi ya Yu. Mana ada aku main suap-suapan sama suap rakyat juga. Aku kalau suapan sama Mas Insta sih boleh banget. Boleh banget. Heh, kamu itu masih anak kecil, nggak tahu apa-apa ya. Lu tuh nggak tahu urusan orang dewasa. Jadi nggak usah ikut campur kalau nggak tahu apa-apa. Paham? 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 Walah dalah kalian ini ya. Bukannya pada siap-siap malah pada debat di sini. Kalian ini seharusnya menjadi cerminan bangsa, jadi warga yang baik, bukan malah hobi berantem kayak gini. Eleh, carmuk nih ye, cari muka kita-kita. Iya. Walaupun aku tuh bercermin berkali pun, aku tuh tetap cantik sejagat raya. Adik kurang ajar. Au. Dekat semut kamu tuh pantasnya. Apalagi ini. Kamu itu adik-adik yang nggak secantik aku. Aku tuh lebih cantik daripada kalian. Tahu? Tahu? Sudah, kok malah jadi nggak jelas sih pembicaraannya? Kamu itu yang nggak jelas. Punya Mbak Yu kok kayak singa sama macan. Ngeri semua kalau lagi pada kompak marah. Sepertinya itu Mas Insta deh. Fotoin dulu Mana Kak, mana Mas Insta? Itu tuh di sana yang pakai baju abu-abu. Bener deh kayaknya. Iya, itu Mas Insta. Ya ampun, ganteng banget. Kan bener, ini kan ini namakan jodoh. My God. Bener, kan jodohku Mbak Yu. Kamu jangan ngadi-ngadi. Aku yang duluan
Jangan melihat tadi. Kamu tuh sebagai mbaknya kudu ngalah sama yang cilik lah. Mana ada kayak gitu, siapa yang cepat dia yang dapat lah. Kamu ini aneh. Mending jangan mikirin itu dulu deh. Mending sekarang kita nguntitin aja Mas Insta. Mbak Yu dari kanan dan aku dari yang kiri. Biar nggak kelihatan kita itu penguntit. Lah, kan kita nguntitin Mas Insta. Dan sekarang Sebagai wanita tuh Mbak harus jaga image. Kan malu dong. Ara-ara. Jaim kalau masalah image pasti nomor 1. Dah, terserah kamu dah, terserah. Ya, yuk Mbak yuk. Ganteng banget sih Mas Insta tuh. Udah manis, pendiam, berwibawa lagi. Aduh. थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। माहिरों दे सुकून, कर मेरी चाहत कबूल, कर कबूल दे सुकून। माहिरों दे सुकून, कर मेरी चाहत कबूल, कर कबूल दे सुकून। माहिरू तुमसे मिला तो यूं लगा खुद से हुआ हूँ मैं रूबरू। मेरे प्यार की हर दास्तां तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू। दिल की सरजमी पे तेरा सजदा मैं करूं। आजा मेरे माही खुद को तुझसे जोड़ दूं। माहिरू दे सुकून, कर मेरी चाहत कबूल, कर कबूल दे सुकून। माहिरू दे सुकून, कर मेरी चाहत कबूल, कर कबूल दे सुकून। माहिरू कैसे हुआ ये कब हुआ, उस पल का मैं करूं शुक्रिया। जो ना कहा लब से कभी, आंखों ने चुपके से कह दिया। कैसे हुआ ये कब हुआ, उस पल का मैं करूं शुक्रिया। जो ना कहा लब से कभी, आंखों ने चुपके से कह दिया। तेरी है अमानत, दिल तुझी को सौंप दूं। ऐसा कर दे मुझ पे, तेरे बिन ना जी सकूं। दे सुकून, कर मेरी चाहत कबूल, कर कबूल दे सुकून। माहिरू दे सुकून, कर मेरी
Hansta pantas dijuluki kumbang desa. Pribadinya yang elegan dan berkarisma begitu, siapa yang enggak kepincut? ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी Aku minta maaf, gak sengaja. Iya, tidak apa-apa. Kamu anteng kan? Iya. Mana Tele? Mas Tele sedang ada kesibukan, jadi tidak bisa ikut di sini. Sayang sekali ya. Padahal ada festival loh sebentar lagi. Benarkah? Sayang sekali kamu sendiri. Ayo kita jalan-jalan. Baiklah. दिल के सितम देखो, दिल के जख्म देखो,
kesejahteraan media sosial, mari kita buka pestanya. Apa yang dibukakan? Kan nggak ada pintu. Iya betul, karena sejauh mata memandang ini hanya ada gadis-gadis cantik yang imut ini. Jangan gitu. Kamu kan sudah punya pacar. Lihat tuh pacarmu kayak kepiting bakar. Ralat nggak jadi. Oh, ada Dek Roro Anteng pujaan hatiku. Kenapa kamu cemburu, Dek? Tahu sana urusin gadis-gadis cantik di sini. Jangan pedulikan aku, Mas. Sana pergi. Ngapain sih ngikutin aku? Udah minggir. Emoh, Dek. Yen ngono aku aja sing minggir. Ojo, Dek. Aku sungguh sayang padamu. My darling, I love you. Halah gombal kamu, Mas. Tidak, aku tadi tidak gombalin mereka. Nggak gombal, tapi merayu, tebar-tebar pesona ke mereka. Nggak salah. Mau pilih siapa ya yang jadi istriku? Mas Insta, mau aku aja selfie nggak? Mas Insta, lagi apa? Nanya lagi, masih mikir lah. Mikirin apa sih? Mikirin aku ya. Walah, kamu kok pede banget sih tanya-tanya nggak jelas kayak begitu ke Mas Insta lagi. Sembarangan, kamu asal ceplos aja. Kan biasanya orang itu kalau gombal lewat SMS kan kayak gitu. Nah, ini kenyataannya. Oh, SMS yang lagunya Bang SMS siapa ini Bang? Bang pesannya pakai sayang yang itu. Bukanlah ya, aku tuh orangnya setia loh. Setia, selalu tipu-tipu wanita, begitu. Kamu tuh kok gitu sih? Kamu nggak suka lagi ya sama Mas Insta? Oh iya lupa, setia, sejati mencintai wanita. Halah, Bayu Selfie nih emang pantas jadi kembarannya Roro Jaim. Jangan begitu, entar orangnya denger. Pada ngegosipin aku ya, pada ngefans tuh sama aku. Kamu tuh SKSD banget sih. Apa tuh? Sok kenal sok dekat, Mbak. Emang kenapa? Suka-suka aku kan? Ada. Ya begitulah wataknya Roro Jaim. Daripada kamu makhluk astral, kabel belum dipasang udah nyaut aja. Karena aku tuh orangnya otomatis romantis. Paham Anda? Semuanya silent, temanku dan juga juragan semata wayangku. Siapakah yang menjadi tambatan hati Anda? Siapa ya? Mas Insta, aku mau pinjam mobilnya dulu dong. Stik rumah kosong, belum diisi. Mau pinjam dulu. Oh iya, silakan. Masya Allah, Dek, kamu tega sekali. Kamu memiliki perasaan dengan Mas Insta. Mas, maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Bukan niat hati ingin mengkhianati, tapi mau bagaimana lagi? Hatiku belum bisa menerima sepenuhnya atas perjodohan kita. Mas Tela tidak bisa memahami perasaanku. Mudah sekali bermain mata dengan yang lain.
Walau itu sekedar bercanda, aku terluka, Mas. Tapi Mas menganggap hal itu biasa. Saat Mas mulai sibuk dan menjauh dari aku mulai menemukan orang yang mengerti diriku sepenuhnya. Bilang dari awal, Dek, kalau kamu tersakiti dengan sikapku, sehingga aku bisa berubah sesuai dengan keinginanmu. Aku sebentar. Bicara apa yang kamu mau di sini. Mas selalu menghilang di masa tersulitku. Katanya Mas akan berhenti bersikap genit dengan gadis lain. Tapi apa buktinya? Mas tetap saja berulang kali melakukan itu. Sudah, jangan bertengkar. Aku tak tahu apa yang ku rasakan dalam hatiku saat pertama kali melihat dirimu, melihatnya. Percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputmu. Kenapa begitu? Langkai dulu mayaku. Ikhlaskan aku ya, Mas. Ya sudah, kalau memang itu keputusanmu. Tapi aku ingin berpesan padamu. Tolong jaga cerita ini. Aku tidak mau anak-anakku nanti tahu bahwa bapaknya pernah memperjuangkan seseorang yang tidak mencintainya. Itu adalah hal yang konyol. Coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka.
kayak sapi di dalam selimut. Udang keles. Marai gantengnya kayak sapine Pak Slamet kayak lo. Iya bener sih. Kalau air tenang itu menghanyutkan, kayak sifatnya si Lor Anteng tuh. Diam-diam seperti itu, kok bisa ya mereka berbuat seperti itu? Iya juga sih. Tapi gimana lagi? Nasi udah jadi bubur. Ya, seenggaknya Mas Sinta udah dapet jodoh deh. Kamu nggak patah hati kan, Mbak Yu? Ya enggak dong. Anak dangdut tuh anti patah-patah hati klep. Tahu? Mbak Yu Selfie benar. Laki-laki itu kan bukan masih insta saja. Mending sekarang kita di hari yang patah hati ini, kita joget dumang aja sama-sama. عم تحكيلي كل شي فيكي وانا هسه هون صافن بكي في جنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض وقلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل أحبك حضل أحبك حضل أحبك هي قصة حب والقلب عم بيدق هي فيلم رومانسي شايف فيه أحلامنا ولو شو ما يصير بيناتنا ايدي بيدك هاي حياتنا دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض وقلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل أحبك